हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आयुष समृद्धि के 2017वें पड़ाव पर हिप्नोथेरेपी टूल फॉर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, चाहे मैनेज कह लीजिए, डायग्नोज कह लीजिए, ट्रीट कह लीजिए, लेकिन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए निश्चित ही बहुत सही है। और ऐसे विषय पर कल हम एक चर्चा कर चुके हैं। आज हम उसका पूरा मेडिकल एस्पेक्ट तलाश करेंगे। सर्वप्रथम मैं वक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आदरणीय आशीष जी और निशांत जी को, जिन्होंने हमारा प्रस्ताव बड़े कम समय में स्वीकार किया। मैं आदरणीय प्रोफेसर विष्णु प्रसाद शर्मा जी को वेलकम एड्रेस के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। नमस्कार, good evening to everybody. Hari Om. Respected distinguished guests, eminent speaker, ladies and gentlemen. I, Professor Dr. Vishnu Prasad Sharma, welcome all of you to AYUSH SAMRIDDHI International Webinar Series on Hypnotherapy, Tool for Psychological Disorder. Most important subject today we have, most necessary subject. So in this webinar, we have eminent speaker. I want to welcome Dr. Ashish Patke from Navi, Mumbai. Thank you, sir. Namaskar, sir, and welcome you to this AYUSH SAMRIDDHI webinar. Next, I want to welcome Dr. Nishant Shukla from Jamnagar. Namaskar, sir, and welcome you to this. Namaskar, sir, to this AYUSH SAMRIDDHI webinar. Next, I want to welcome Professor S.B. Tripathi from New Delhi. Namaskar, sir, and welcome you to this AYUSH SAMRIDDHI webinar. Next, I want to welcome Professor Dinesh Prasad from Patna. Namaskar, sir, and welcome you to this AYUSH SAMRIDDHI webinar. Once again, I welcome all the eminent speaker, distinguished guests, ladies and gentlemen, to this AYUSH SAMRIDDHI International Webinar Series on Hypnotherapy, Tool for Psychological Disorder. सबको स्वागत करते हूँ। नमस्कार। ओवर टू पवन जी। बहुत बहुत आभार सर। जैसा कल भी चर्चा हुई थी कि ये एक बहुत अच्छा तरीका हुआ करता था सुश्रुत काल से, और मेरे ख्याल से जब से मोहन और सम्मोहन, मोहन से ही शुरू हुआ, पहले भी सम्मोहन हमेशा से रहा है। तो जहां भी हमारी मोहक मूर्ति या मोह आ जाता है वही सम्मोहन है, लेकिन उसकी वैज्ञानिकता, उसके क्लिनिकल एप्लीकेशंस बताने के लिए, गाइड करने के लिए कल आशीष जी बहुत अच्छा बोले थे। बहुत ही शानदार आशीष जी, बहुत ही एक्सीलेंट, रियली। आज भी हम आपसे ज्ञान चर्चा उसी तरह का आशीर्वाद चाहते हैं। मैं निशांत जी को धन्यवाद देता हूं कि वो बस में है। कहाँ रुकेंगे राजकोट में, वो आगे रुकेंगे, लेकिन अभी वो बस में है। मैं आदरणीय आशीष जी को स्वागत करता हूँ। धन्यवाद प्रोफेसर शर्मा जी। मुझे खुशी है कि प्रोफेसर निशांत शुक्ला जी बस में हैं, नहीं तो लोग बेबस हो जाते हैं बस में। वो बस में है तो हमारी वेबिनार सही बैठ जाएगी। अब किसके बस में वो भी बता दीजिएगा सर। ऊपर वाले के, सिर्फ ऊपर वाले के, और ऊपर है IRES। आदरणीय सीपी शर्मा जी और आदरणीय रामवीर शर्मा जी का, दोनों का भी खूब स्वागत है। तो मैं आशीष जी से प्रार्थना करता हूँ। मैं केवल इतने एक वाक्य बोलूंगा कि जहां से हमने कल अपनी यात्रा छोड़ी थी हिप्नोटिज्म से, वहां आज हिप्नोथेरेपी ग्रुप में साइंटिफिक अप्रोच के साथ में आप लोग उपस्थित हुए, क्योंकि कल वो नॉन मेडिको थे। तो आज हमारा जो दृष्टिकोण होगा वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से होगा। और कल आपने धीरे से समझा दिया था कि ज्यादा मत सोचिए, नहीं तो फौरन हिप्नोसिस हो जाएगी। तो हम लोग अलर्ट बैठे हैं कि पवन जी को आपने कह दिया तो मुझसे कुछ नहीं निकालना, नहीं तो वो वैसा घटित होने लगता है। तो घटित नहीं होने देंगे। आप लोग आ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय फड़के जी, स्वागत है। So once again, thanks for giving me opportunity and calling me for this particular session.
Today I'm going to speak from two positions. One is like Ayurved consultant, but more than that, I'll be today speaking on behalf of hypnotherapy fraternity, because I've taken proper training in hypnotherapy. Started with basic hypnosis, then master level hypnosis, and then ahead, rather than going to stage hypnosis, because stage hypnosis is one of the area which many people still practice. And being a physician, we are not that way interested in stage hypnosis, but I was more curious to know how hypnotherapy can be of great help to our patients. So I continued my education in hypno, and I completed advanced level of hypnotherapy. Then thereafter, I again continued further for doing past life regression therapy, which is again a part and parcel of hypnotherapy itself. So with that angle, whatever experience I have collected so far, so good. In last couple of years, say I think from 2007 up till now, I'm using hypnotherapy in some select patients, not in all patients, some select patients. So before we go with details about the medical aspect of it, yesterday I spoke about one thing, that how hypnotherapy is different than yoga nidra, because one of our respected speakers said it is same as yoga nidra, and which is not. So how it is not, we have discussed yesterday. Today, I'm going to touch upon another interesting aspect, and that is meditation. Because many a times people they say that meditation is nothing but a hypnosis. So again, it is not. Um if we want to see the different uh, models of getting into phase of meditation, then there are various ways, like the dhyan ke alag alag vidya hai. Whichever way you want to take, you also get into trance in meditation as well. In hypnosis also you get into trance, and in trance phase only we work. So that is the commonality. But hypnosis is and again I very specifically clear it at the very beginning, that whatever now we are going to discuss is Western hypnosis, not Indian hypnosis, right? Because Indian hypnosis is a different ball game. We will not enter into that. But Western hypnosis is a scientific and therapeutic in nature, particularly hypnotherapy, whereas meditation is spiritual. They have mentioned only spiritual at one of the texts, but I add that even meditation can be therapeutic, and it is therapeutic, and we all are aware of it. Those who are into yoga field, those who are doing yoga therapy, they all will agree with me. Okay. Then uh, subject of scientific scrutiny that is there for hypnosis commonly as compared to meditation. Meditation is usually subject of philosophical scrutiny per se. But now things are also changing in a last couple of decades. Now people are also referring to meditation as a kind of experimentation, and they are trying to do scientific scrutiny of the meditation also, or the subjects those who are doing meditation. So it is again not exactly going as a hardcore difference, but yes, we have to pay attention to that as well. Then studied scientifically since last almost 2 centuries. What? Hypnosis or hypnotherapy. Okay. Whereas it is a spiritual experience since ages, but it has started taking a role of a scientific scrutiny for couple of decades, not centuries, but couple of decades, with so-called modern scientific scrutiny, right? Otherwise, if we see the historical roots of meditation, dharana, dhyan, samadhi, particularly dhyan, it is also going thousands of years ago. But if we take the normal parameters of whatever we usually call for the scientific scrutiny with reference to modern sciences, contemporary sciences, then it is not so. A couple of years only back, or a couple of decades back, people have started working on dhyan.
may it be Maharishi Mahesh Yogi ji, may it be another, sects where they are doing Dhyan Paddhati. And then people are working on them by putting them, by making that sadhaks to sit inside that Faraday's chamber, and then to take fMRI, and then to check which particular lobe of your brain is getting lit or things like that. But with reference to hypnotherapy, we can trace it back to several centuries, particularly to 2 centuries to be more precise. Okay, since almost 1800 onwards, you can trace out papers, scientific papers. Then it is a fertile ground for research, difficult to quantify and experience. That is particularly mentioned for hypnotherapy or hypnosis. And here it is comparatively difficult to quantify, or in case of meditation. Then here hypnosis or hypnotherapy, anyone can learn provided he goes systematically, right? So there is nothing like specific, you require to have certain, of course there are do's and don'ts, there are some limitations which I have mentioned last, in last session, yesterday's session. If a person is a psychotic, then he obviously will not be able to undergo hypnosis, neither he will be able to do hypnosis for others in hetero hypnosis. So forget that exception, but otherwise commonly anybody can learn hypnosis. And further, if he goes on that track for a particular level, then he can also get trained as a hypnotherapist. Okay, whereas in case of meditation, that is not the case. A moral and ethical code of living is prerequisite before you actually get renunciation and going for the practice of meditation. So that is another part. Then it is goal oriented. Hypnosis is goal oriented. Hypnotherapy is goal oriented. Whereas in the other case, in meditation, again it is goal oriented to some extent. Moksha is the final destination. But again, the based on various schools, the goal would vary, right? But here, particularly in hypnotherapy, the goal is very specific. Then relaxation and deep breathing are utilized as an induction tool in case of hypnosis and hypnotherapy. Okay, whereas stillness of body and mind is essential in case of meditation. And it is mentioned in yoga. I'll not get into that because in itself it becomes an entire 2 hours or 1 hour topic by itself. Then it is utilized for therapeutic healing and personality development as well. What? Hypnosis and hypnotherapy. Whereas uh, meditation is giving health and disease prevention, and also it helps particularly, going ahead on a spiritual path. So basically their tenets are different, so we have to understand that self hypnosis is easy to learn and practice and can be taught individually and in a group by academicians in case of hypnosis. Whereas in meditation, you require guru. It is difficult to find a bona fide guru, a proper guru, not the one who just name himself or herself as guru, because that can lead you to disasters. Okay. Then archetypal symbols are meaningful images may be utilized in case of hypnosis. Okay. Particularly yesterday I spoke about Ericksonian. So in Ericksonian type, this kind of symbolism is basically used in hypnosis and hypnotherapy. I gave example of PCOD. I gave example of blooming off of flowers. So that is one of the typical example. And focalization on a form of sound or mantra or visual symbol of a deity or internal imagery like chakras and all, they are being utilized in case of meditation. Then insight generation and creativity is a step-by-step process in case of hypnotherapy or hypnosis. And it is particularly pathless land where there is no destination, no goal, and enlightenment happens. Up
subtle dhyan in case of Ashtanga Yoga, you do, right? You try to do yama, niyama, asana, pranayam, pratyahar, everything you try to do and you achieve. But samadhi happens by its own. So that is the very important aspect vis-a-vis to that of hypnotherapy. And guided hypnosis is unlikely to do any harm. Usually it never makes problem, right? Meditation has driven people crazy when not practiced under supervision of a guru or guide. And I have seen such kind of examples in my practice also. While sitting next to my guru, who is no more now, unfortunately, but Sadashiv Rao Nimbalkarji, Padmashri, Yogacharya. So I have seen some of the people meeting him and having such kind of problem. He has spoken about people, those who have met to his guru. Kolananda Swami Kolanandaji from Kaivaladham, right? So such kind of things can happen in yoga if not done properly. Whereas if you have script and you give that script or you reiterate that script in hypnotherapy, usually it will not create any problem. Then freedom from afflictions by hypnotherapy can be possible. Okay, whereas attainment of kaivalya, journey alone to alone, that can be seen or that can be achieved with the help of meditation. Now you may think that why I am saying all these points which are very theoretical, so let us be little more practical and let us be more specific to the process. Yesterday, I spoke about how this hypnosis takes place. I just say in a brief, just to brush up. Like what happens is we try to give a lot of stimulus. And as I mentioned yesterday, our mind has got conscious, subconscious, and unconscious, these three compartments with reference to hypnotherapy or hypnosis model. Okay. Now, this conscious to unconscious, whatever we hear, we listen, everything comes to conscious. And those stimulus, you can manage up to 10,000 units per minute. 10,000, so much high. But if your stimuli goes beyond that, then they actually, and in below that, what happens is your conscious mind will decide what is to be kept aside, what is to be kept in that particular zone, what is to be thrown out, or what is to be absorbed, right? But later on, what happens, the system gets hanged, and then whatever you speak slowly start getting seeping in that particular middle zone of that of subconscious, and there it goes and gets stored in a systematic way of folder and file format, which I have already mentioned in last session, so I'll not repeat. Okay, and whenever you get triggers or whenever you get external stimuli which will trigger, then those experiences, those memories, those things will come up, and then that particular person will suffer certain problems. So that was we have seen yesterday, right? Now sometimes you see that when we actually use this kind of method of using hypnotherapy, so we basically hang the system, and after hanging system, you open the gates of subconscious and let suggestions come inside the mind and get fixed at the level of subconscious or even unconscious. Okay, that is the idea. Whereas in Indian style, the process is different. The Indian hypnosis, they concentrate like how we do otherwise in yoga. And here it is different. You try to defocus and then you make the entry of that suggestions. And then you take the subject in different stages. Now what are the process, the typical process in any hypnotherapy clinic? Whenever a patient comes, then he has to be in front of that therapist has to create his rapport, like how we all are doing the same thing while treating with Ayurveda or while treating with modern medicine. Unless and until that patient do not think that this person has got real knowledge
and he's a knowledgeable person and a potent person who can help me out in my problems, they, till then he will not be actually cooperating you. So that hypnotherapist's role has to first create a rapport building with that particular person. Okay, so usually we start speaking on the mind. We speak about the theory of mind, the part, some of the part I already spoken with you all, and then we go ahead in a history taking, like how we take history in a normal medical system. Same way we take history in hypnotherapy as well. And in hypnotherapy history taking, he says that why he has felt like coming to us, okay, coming to hypnotherapist. Because before coming to hypnotherapy, he might have taken medicines from other medical community. And since he is not getting benefited, then and then only he is thinking of coming and approaching hypnotherapist. Or he might have heard somewhere that, okay, hypnotherapy may be useful in that particular sense. And when he starts speaking, to which we can say in other word counseling, which is a talking therapy or a chair therapy, in that he goes to a particular level and gets stuck, and then he cannot express himself or herself further. And that's the time, that's the thing which you have to pick up as a hypnotherapist, that this is the triggering point, and that is the root cause which you need to explore. And after exploring only, you will be able to heal that person at that point of time, in that point of time framework, and bring him back. So you have to explain him that what we are going to do with. You explain that we are going to put him in the process of induction, what we call induction process. And we explain, look, you are supposed to lie down on that particular couch or that bed, or you have to sit on a relaxing chair, and we'll be doing this. Are you okay? So take formal consent. Nowadays it is also required to take a written consent. Okay, then tell him that nothing is going to harm him, nothing is going to happen, because there are a lot of things which are actually making people worry, that what if I get into trance, and then this fellow is going to control me, and what will happen to me? So you have to reassure, you have to solace that person and make sure that he or she will be taken utmost care. As I mentioned yesterday, you can also allow your relative if it is really required. Otherwise, client is alone, a patient is alone in the room, but you tell that we will be recording your statements and we will be giving you those statements with you while going home. Okay, then you start induction. Now there are various different styles of induction. Yesterday, last after finishing two sessions, I forgotten his name, but somebody spoke on hypnosis and hypnotherapy in the discussion section, and he mentioned about rapid hypnosis. So what Mr. is rapid Keywood. hypnosis? Yeah, that fellow I remember from Mumbai only. So rapid hypnosis is the technique with which now I can do it online also, but I'll not do. But then when somebody is looking at me, and then I just make a thing like this, and I do certain steps, and the person will drop his head and he will sleep. Okay, so that is rapid hypnosis. Or you ask person to put his hands like this. I'm just showing. Just have a look. Ask, keeping hands like this, close eyes, and then give him suggestion. Now there are magnetic pull from your both palms, and they are pulling your palm, and slowly and steadily, without knowledge, that person will bring his two palms together, and one point he will just get stuck. Okay, and then you ask him, now try to open your eyelids, and he will not be able to. So that is rapid hypnosis. Within no time, you can hypnotize someone. And once he gets into that, then you have to check whether he is really into hypnosis or is just behaving like that. Because some people, they are more enthusiastic and they try to fool you also. You means hypnotherapist. So you have to be careful that whether they are really into it or not. So one of the sign is, there is a catalepsis.
the eyeballs start moving, tuck, 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 tuck. In the close eye also, you can check it. Okay. Then you ask that, make your arm straight and as straight as a bamboo. And it's a complete stick. And you can't bend at your elbow joint. And whatsoever way you wish to hold it, fold it, you will not be able to. And when he tries to, it can't. And you might have seen pictures like in stage hypnosis, usually they do, we don't do in clinics, but you can place person's head on one stool and heel on other, and the person is lying down like a board, hard board. And that is the exact time that a person has actually gone into deep trance. Okay, so once you do induction, then there are various ways of doing induction. You can ask that person to look at particular fixation point. Okay. Sometimes back you might have seen some pendulum is been put, and you look at pendulum movies and serials, you see that. This is one of the way. Okay. Other ways, just look at your eyes and person gets hypnotized. Other way, you just ask them to close eye and do deep inhalation exhalation, and then certain other suggestions you go on giving, it gets hypnotized. So there are various ways, various techniques. And once you get that person into that technique in that particular induction, then you have to deepen that stage of hypnosis, because we are working for the patient, not just for the stage. So you have to deepening is very, very important. And there are various ways of deepening. So we make person get down, climb down 20 steps, and every step when he will climb down, he will get 10 times more relaxed. That's what we say. And we go on making him coming down, and we say, oh, you are now 200 times relaxed, and now you are completely, in a great way, enjoy this sleep. And the person really enjoys. Okay. And when he comes to that particular point of time, then that is the time when we have to take his mind towards that specific movement which is disturbing him, or which is having pain, or which is having agony, or which is having bad memory, or whatever. But before going to taking him to that bad memory or negative aspect, we have to ask him to recollect good memory, right? So you ask person that you recollect good part of your life when you were very, very happy, and then that fellow goes immediately to that good memory. He start explaining, and we have to tell him that you have to just explain it to me verbally, not inside your mind, otherwise it's of useless. So you have to explain, and without keeping any hindrances, no inhibitions. And once he goes to that level, then you fix him, anchor his mind on that plane, and then you take him to the bad part. And then when, if there is something like sexual abuse in earlier life, or something death of any very near person, or any setback in his own personal life, or in the business, or whatever maybe, then you have to sometime create a situation, and you have to see that that patient relives that particular phenomenon at that point of time. I repeat, we have to guide that person to relive that original phenomenon where he had that suffering, and it has been stored inside him for such a long time. And that is precisely known as hypnodrama. Yesterday, again, that fellow mentioned about it. So, what is hypnodrama? Like in psychodrama, in counseling, we recreate. In trance, we recreate, and that is known as hypnodrama. And in that hypnodrama, you have to use some of the other tools, some of the other actions. Like somebody is hitting somebody, so you say that, okay, now you are very strong and you are hitting him on his nose, and you are winning that particular fight, and you are not as fearful as you were then, and you are need not be frightened about that personality, because now you are very, very strong, something like that.
Okay, and when he does that in that point of time, then you heal that person at that moment of time. So please remember, in hypnotherapy, we heal the person, we don't treat the person. So there is a difference. In other medical fraternity, we give medicines and we treat the person. But in hypnotherapy, in psychotherapy, in all these Reiki, aura, in all these other, sects, we do healing of the person. And once the person is properly healed, then he expresses, he cries, he shouts, he gives his expression. And then we ask him that, okay, now we are coming back to the presence. And then we give some instructions so that he regains the presence movement slowly, bit by bit. You can't just take him out from that moment immediately to present. No, that is harmful. So you have to come systematically. And when you come to the final, so you bring that person back to today's orientation, this present tense, and you complete the session. Sometimes, as I mentioned yesterday, you also give command that whatever happened in that particular hypnodrama session, we don't say that hypnodrama to the patient, but I'm just saying to all of you, because all of you are medical people. So we don't ask them to recall that, or we make it much, much lighter, so that they will not have the agony or pain after they come back in the present tense. Sometimes it is very, very crucial to remember each and everything. For example, if a person is coming to us, or a student is coming to us for exam fear, test anxiety. So in that, he has to remember everything, whatever we do. And we say that step by step, you will have to remember. And when he comes out, then we repeat, we ask him in conscious phase, what you have done. Then he says, sir, apne mujhe relax kiya. We do, by the way, we do PMR, progressive muscular relaxation, like what we do in yoga nidra. Similarly, we do here as well. So progressive muscular relaxation from top to down, from head to toe, or from toe to head, whichever way you wish to, you can practice that, and slowly and steadily the person gets into complete relaxation. Okay, and then we ask what other steps you have done. Then he says A, B, C, D, E. And then in that, sometimes we give cue. Now what kind of cues? If you feel palpitation when you enter in the exam hall, if you start feeling shivering, if you feel like drying off your tongue, if you feel mental block, or blanking kind of phenomenon, you just blank out, you don't recollect whatever you have studied, then in that case, what usually we say that we give a cue, that you just put your index with your thumb and press it 3 times, 1 2 3, and the moment you do that moment in the presence also, you will feel immediately relaxed. And actually it happens, right? Actually it happens. Before learning this, even I was wondering, and I was thinking, oh, this is majak hai, this must not be real, but this is really real stuff. And you give such kind of cues, so which can help patient even when they are working in conscious space, but they remember from their subconscious, and they utilize those cues in their day-to-day life. Okay, so these are some of the techniques and journey what people they go with. Now in case of hypnotherapy, some another interesting things what happens is that when you put somebody in trance, their sense organ becomes more sharp. Like whenever we used to learn in the classroom, a person who is on the chair usually been asked, like apart from learning or remembering what a therapist has given you instruction, have you also heard something else, or have you remembered some other activities going in the classroom? And precisely that person would say so and so, because by that time you remember the names and you recognize the voice of the person, of your colleagues, your classmates. And the person would say, oh, so and so she spoke in between, so and so
said something, or somebody knocked the door and or opened the door and went out, something similar, somebody has coughed in between twice or thrice. So all those minute details can be picked up by the mind of the person who is into trance. So the same can be utilized for making benefits to some of the people. Like if there is one needs to increase concentration and focus, so you can work on that. If there is a stage fear, then you can make that person say something in front of 1,000 people in that hypnodrama. And once he comes out, then we used to ask that person to speak in front of a group of 30 people, those who are inside classroom, and the one who has never taken session before in their life, the one who used to tremble initially, they can speak. Or the one who is addicted to say smoking, so you can de-addict person from smoking, from drinks, and there are ways and means to work on that. Okay. Hypnotherapy can also be very nicely utilized in people those who have got a lot of pain, ache and pain. And I'm sure most of our colleagues here, those who are practicing Ayurveda, our bread and butter is ache and pains, arthritis, for example, osteoarthritis. So if we can control pain to some extent by hypnotherapy without adding one more pill, why not? And there are certain techniques in hypnotherapy like ice technique. So we do that process, and we say that once you touch that particular part where there is a pain, it will feel like an ice pack, and immediately your pain threshold will come down. And we ask him at what level the pain is all about, 0 to 10. So initially, if it is 9 or 8, so in that particular trance, the person would say, oh, it is gone, or it is 3 or 4. And once we make that person bring out, then also he remains in that 3 and 4. That is the beauty. Hypnotherapy, if it is taken to that depth, in a really great depth, then you can do some of the surgeries, particularly in dentistry, particularly in OBGYN, having deliveries, painless delivery without any anesthesia. You can do so. I have seen one of my colleague practicing that in my presence in the OT. I was attending along with him, and it is possible, though it is not very common, but in dentistry I have seen in number of times. Okay. So it has got multiple possibilities, multiple role. Now you can do age regression. You see some people, they have complaints like anuresis, bedwetting. So you can control that with hypnotherapy. Or somebody is having some behavioral problems. So you take that person in age regression. There are methods in hypnotherapy, and you take him in early age. And how much early? Intrauterine life, or just born few days. And then that time's memory, he recollects, that person recollects, and you see the answers over there. And then you work on that, you explain that person vis-a-vis to his problem, whatever he is mentioning for the today's moment. Then you can heal that person, and it can be done in n number of such kind of situations. Then you can also utilize hypnosis or hypnotherapy, particularly for reducing weight, obesity, because people, they can't control their wish to hold on eating with particular interesting food. So you give hypnotherapy, you train his or her mind, and then bring him back or bring her out. And then over a period of time, along with your modern medicine or Ayurvedic therapy, you see that a person has got pretty well good control over the eating or over exercises. People, they have usually, they try to pull on. They know that I must walk, but they can't walk. So you can inspire them to do that daily exercise through the mode of hypnotherapy.
And finally, you can also even work in uh, conditions which are from the past lives, which you don't know what is the reason why the things are happening in current life. And when you take that person deep down, or he gets slipped into past lives, then you can decode what are the problems, and then you can work on that for that moment and bring him back or bring her back to today's context, and you can see a lot of change. So I think I have tried to cover almost broad spectrum in the practices on of hypnotherapy. Now there are actually various new types which have occurred, like behavioral therapy, hypnotherapy. Then there are many other types which I'm not getting into, but I think this is enough to get at least orientation what hypnotherapy is and how it can be useful in our medical practice. So once again, thankful to everyone for patient hearing. And if there are any questions, I'll be happy to answer those. Thank you very much. एक्सीलेंट फड़के जी, रियली एक्सीलेंट। आप बड़े सरल शब्दों में बड़े अच्छे अच्छे रहस्य समझा गए, बहुत अच्छा अग्निहोत्री सर। जी बहुत ही सिंपल में बतलाया बात, और बस हम डर ही रहे थे कहीं प्रैक्टिकल न कराने लगे, क्योंकि हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जैसे ऑटिज्म ऑटिज्म पर विद्वान लोग अपनी चर्चा करते बताते हैं कि कुछ कुछ ऐसी बातें बता दी कि हम में से सभी थोड़ा बहुत ऑटिज्म की सिचुएशन से सफर करते हैं। और यहाँ भी हमको ये लगा कि कुछ कुछ हिप्नोटाइज हम लोग होते ही रहते हैं दिन भर में, किसी न किसी टाइम, किसी न किसी कारण से। और कई बार तो ऐसा किसी नाम विशेष से ही व्यक्ति जो है वो हिप्नोटाइज हो जाता है, डर जाता है कि जैसे कि परीक्षा आ रही है या वाइवा है, कल पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, तो आदमी थोड़ा, चाहे उसको नर्वस कह लीजिए, चाहे वो प्रिजुडिस कह लीजिए, कुछ कुछ सिचुएशन मेंटल स्टेटस बदलती है। तो मैं सोचता हूँ इसका भी किसी हिप्नोथेरेपी के अंतर्गत कोई शब्द दिया जा सकता है। बट आपने अच्छे समझाया, और आपने लास्ट सेंटेंस में बोला कि कम से कम एक ओरिएंटेशन तो उसके बारे में मिला कि हम उसको एक सही शब्दावली में समझ सकें। और चूंकि मेंटल फैकल्टी इन्वॉल्व होती है तो सीधी सी बात है, एक्स्ट्रा थिंकिंग का मौका तो बनता ही है। आपको बहुत बहुत आभार। आपने, आपके पास इतनी इतने साइंसेस का कलेक्शन है, माने मास्टरी है, कि उसका एमलगमेशन बन जाता होगा कि हम किस विषय पर बात कर रहे हैं, और दूसरा इम्पैक्ट भी आ जाता होगा, जैसे कि योग थेरेपी, योग का पीएचडी है, उधर मेडिटेशन भी है, बहुत चीजें हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार। ओवर टू प्रोफेसर पंप शर्मा जी, नमस्कार। आशीष जी ने इतना सम्मोहित तो कर ही दिया कि ये मैं पूछना चाहूंगा उनसे बाद में कि भाई कहाँ कोर्स होते हैं ये, हम भी करने को रेडी है। तो ऑनलाइन भी तैयार हो तो। हाँ, थैंक यू थैंक यू। एक एक हाँ ये पूछा था कि जैसे तो आपने मैं बताया ना अब कि आदरणीय हेड डॉक्टर एक स्टूल निशांत रख शुक्ला देते हैं जी और को, वो निशांत शुक्ला जी आ गए क्या आप घर में? मूवमेंट आ गया सर, निशांत जी, आ गए, जय हो। आ गया हूँ। आप इंफॉर्मेशन ले जय लीजिए। हो। राइट टाइम एंट्री है, ये राइट टाइम एंट्री है। आप बुलाए और आपका हुक्म हो, आयुर्वेद में है। जय और हो। वायु की अगर तब तक जब तक आप सेट हो रहे हो तब खेलना तक मैं सीपी है, शर्मा जी को बुलाता हूँ। जय फलके हो। सर कह रहे थे ना? Yes, sir. आप कुछ कह रहे थे ना कि एक स्टेट ये भी बनती है कि जब इतना ज्यादा मसल स्टेट हो जाती है, मतलब बैंड खत्म हो जाता है और हेड टिका देते हैं स्टूल पर और सामने हील्स रख देते हैं, और समटाइम्स वो सपोर्ट भी हटा देते हैं, हाँ हाँ एकदम बिल्कुल, स्टेट हो एक जाता एक है तो वो। सपोर्ट पे भी रहता है, एक सपोर्ट पे हाँ भी बिल्कुल, रहता है। सपोर्ट हटा देते That's true. हैं वो तो चीज यूजुअली असल ये चीजें ना मेरेकल दिखाते हैं, कई स्टेज शो में क्या दिखाते स्टेज हैं। हिप्नोसिस में ज्यादा करते हैं, इन जी जी क्लिनिकल जी जी। हिप्नोथेरेपी हाँ, वी डोंट डू। कई बार बिल्कुल हटा देते हैं, हवा में टंगा हुआ ऐसा लगता है फ्लैट। जी आजकल बहुत आ रहा है, फॉरेन की वीडियोस में भी आता है, और वैसे भी कलकत्ता मेरे उसमें मैजिक में भी आ जाता है। जी। चलिए आदरणीय सीपी शर्मा साहब अपने कुछ विचार रखिए जब तक हमारे प्रोफेसर निशांत शुक्ला जी सेट होते हैं। स्वागत है, नमस्कार सर। जी आप सर। अनम्यूट करिए जी, स्वागत है। जी अग्निहोत्री जी प्रणाम, और पवन जी को
बहुत बहुत धन्यवाद कि नया नया कलेवर, नए नई विधा में, नए नए, कहते हैं ना, भावनाओं के संस्कार मिलते रहते हैं। जो छात्र लाइफ और बिगनिंग में जब टीचर बने थे तब जरूरत थी कि ऐसे संस्कार मिलते तो अपन कुछ और सोच सकते थे, अच्छा सोच। मिलना तो नई साल 25 में था ना, नए नए साल में। तो ये हमारा सौभाग्य है। हाँ तक सर, मेरा इस मामले में एक छोटा सा विचार है। जो हमारी मानसिक चिकित्सा, मनोचिकित्सा, धी, धृति और स्मृति, तो जो धी है, धी में तो ये है कि भाई काना बुद्धि, और जो स्मृति है, तो हम जो हिप्नोटाइज कर रहे हैं, हिप्नोसिस कर रहे हैं, उसमें हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, वो ज्ञानेंद्रियां को हल्का सा अपन डाइवर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो भी मानसिक चिकित्सा या हिप्नोसिस की जो चिकित्सा है, जैसे आपने कहा कई बार ऐसे हिचकियां आती, तो कहते हैं कि उसका एकदम कोई ऐसी उसकी बात बताओ उसको कि वो एकदम उसको वो हिचकियां बंद हो जाती। तो क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है। ऐसे ही पुराने जमाने में होता था कि आंख फड़क रही है, बोले के ऊपर एक आंख के पलक के ऊपर एक तिनका रख लो। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं सर हमारे नर्वस सिस्टम से निश्चित ही, और नर्वस सिस्टम में जो मेन प्राण और उदान वायु, ये दो वायुओं का विशेष रूप से रोल रहता है। क्योंकि अ, जो वायु है, वायु को कह दिया उन्होंने वायुस तंत्र यंत्र था, सर्व इंद्रियाणाम उद्योजक। ऐसा मन के ऊपर भी उसका कमांड है। उसमें अपन देखते हैं सर कि कई बार टीचर हमको पढ़ा रहा है, और टीचर पढ़ा रहा है तो हम उतने ज्यादा सम्मोहित हो जाते हैं कि हम उस क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ बैठे रहते हैं, और वो भी बड़ी तन्मयता से। तो वो क्लासें उस समय हमें पूरी ग्रास्प हो जाती, वो हमारी स्मृति में। तो जब कभी हमें जिंदगी में, परीक्षा में ही नहीं, जीवन में जब, तो इस तरह से जो हिप्नोसिस है, हिप्नोसिस में इतना अधिक गंभीर, मतलब एक संन्यास कहेंगे, पूरी संन्यास की स्थिति बन सकती है। और जैसा कि फड़के जी ने बताया, उनके जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस थे, उनका जो सैद्धांतिक आकलन था, वो निश्चित ही उपयोगी सिद्ध होगा हमारी चिकित्सा में। जैसे उन्होंने ओरल बक्कल कैविटी की या डेंटिस्ट्री में बताया कि इस तरह से हम एक एक बंधन होता है सर, एक गुजरात में करते हैं दांत में, ये महाराष्ट्र में भी करते हैं। कि जब दांत निकालते हैं तो वहाँ कुछ एक बंध जैसा लगाते हैं, उससे वो उसको दर्द ही नहीं होता। तो ये इसके ऊपर अलग से एक वो होना चाहिए। हमारे यहाँ जो ईएनटी है, नाक कान गला विभाग में, डेंटिस्ट्री को दंत विभाग का, दंत रोगों का, मुख रोगों का एक अलग से डिपार्टमेंट सेट हो, और उसमें ये छोटी छोटी बातों पर जैसा कि फड़के जी ने बताया कि इनको चाहे वो हमें आइस पैक लगाना पड़े या हमें उसको थोड़ा सा मन को डाइवर्ट करना पड़े, तो वो क्षणिक
इम्प्रेशन में। वो कह रहे कुछ नहीं है। कई बार अपन भी जब प्रैक्टिस करते थे शुरू में, एलोपैथी करते थे, इंजेक्शन लगाते थे, तो उससे पूछते क्या नाम है तुम्हारा, तो नाम पूछा है तो वो नाम बोलने लगा, इंजेक्शन लगा दिया। तो ये कुछ इस तरह की छोटी छोटी सी ट्रिक्स टेक्निक्स हमारी अप्लाइड क्लिनिकल एप्लीकेशन में आए, जो व्यवहारिक हो सकते हैं चिकित्सा में, और इस विधा के साथ उसका साइंटिफिक स्टडी हो तो वो हमें ज़्यादा उपयोगी और हमारे सेवाओं में एक नया कंसेप्ट ला सकती है, नया व्यवहारिक प्रयोग ला सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ, मेरा ज़्यादा अनुभव नहीं है सर इस मामले में। धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार सर, आपका बहुत बहुत आभार। मैं अब निशांत शुक्ला जी को सादर आमंत्रित करता हूं उनके विचारों पे। फिर हम अगली वेबिनार शुरू करेंगे। किरण जी, स्वागत है आपका रेटिनल डिसऑर्डर पे। सर आज थोड़ा निशांत जी नमस्कार। प्रेजेंटेशन को शेयर करें, कर पाएंगे? हाँ, करूंगा करूंगा, अरे आपके लिए जान हाजिर। थैंक यू सर। बाकी हमारा तो ऐसा है कि पवन को खुश रखना चाहिए, नहीं वो आप खुश भी बस, रहेगा तो स्वस्थ रहेंगे। नहीं आप भी बस में रहिए तो सब कुछ ठीक रहेगा। बस उसी को बस में रखना है, बाकी तो वायु बस में रहे तो सब कुछ ठीक है, तो सभी बस में है। प्रोफेसर सीपी डॉक्टर साहब कह रहे थे ना, सीपी शर्मा जी, तो वो हमारे यहाँ बंद होते हैं, मूला बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद, तो जालंधर बंद की सहायता से वो दंत पीड़न कर लेते थे। जलंधर बंद विधि से ये करते हैं। जी जी जी। लाभशंकर शुक्ला जी ये करते थे गुजरात में। उसके बाद ये परंपरा अभी जो है ये इस पर थोड़ा साइंटिफिक वर्क हरिद्र दवे जी ने किया, और हम्म। उसके बाद तो कभी काफी सारे जो है ये दंत विद्या के चिकित्सक हैं। राजकोट में एक परमार जी करके हैं, वो ये करते हैं। अहमदाबाद में भी दो एक लोग हैं जो ये विधि से दंतोत्पाटन वगैरह जो है ये करते हैं। तो मैंने भी शल्य अकाउंट में आए थे तो उन्होंने दांत उत्पादन करके दिखलाया था, हमने ऑनलाइन किया था। और जो इंजेक्शन वाली बात, तो मजा आ गया कि साहब नाम पूछा, इंजेक्शन लगा दिया, या कल रात क्या खाया था, जब तक उसका ध्यान उधर गया उतने में इंजेक्शन लग गया, वो भी बहुत शॉर्ट टर्म जो ड्यूरेशन का होता था। जी। आप प्रेजेंटेशन दीजिए जी, शायद प्रोफेसर पवन शर्मा जी चालू कर रहे हैं। अनलॉकिंग द माइंड, द पावर नमस्कार। ऑफ पोटेंशियल जी। नमस्कार। 2017 की पायदान पर इस इम्पोर्टेंट विषय पर कुछ एक अपने पक्ष रखने जा रहा हूं। अनलॉकिंग द माइंड, द पावर एंड पोटेंशियल ऑफ मेडिकल हिप्नोसिस, इस विषय पर अपने कुछ विचार यहाँ पर प्रस्तुत है। पेशेंट को कब ये जरूरत पड़ सकती है, किन किन लोगों को ये विधि से अपनी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। सर एक ही सेकंड, मैं अभी थोड़ा प्रियम्बल करना, किस किस कंडीशन में ये करवानी चाहिए उस पर थोड़ा जो है ये पहली ब्रीफ हम बात कर लेते हैं। पेशेंट को जब पेन की प्रॉब्लम हो और पेन कन्वेंशनल तरीके से राहत ना मिलती हो, कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी हो, साइकोसेक्सुअल या फिर साइको सोशल या फिर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हो, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज की भी डर लगना, कैंसर का डर लगना, और इन सभी और इसके अलावा जितने भी स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मूड डिसऑर्डर्स है, यहाँ पर पेशेंट्स के माइंड को अच्छी तरह से टटोलने की जरूरत होती है। उनमें छिपे हुए राज को हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत पड़ती है। ये एक आइसबर्ग की तरह फिनोमिना है, जो जहां पर आइसबर्ग का जो बड़ा हिस्सा पानी के अंदर रहता है, मन में छुपी हुई इन बातों को किस प्रकार से हमें बाहर लेकर के आना है, और उसको एक चिकित्सा नैदानिक पक्ष में, और उसको किस प्रकार से हम चिकित्सा के एक शस्त्र के रूप में उपयोग कर सकते हैं, इस पर कुछ एक विचार यहाँ पर प्रस्तुत है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर नेक्स्ट स्लाइड।
ये मेरा एक सूक्ष्म परिचय। अब बात करते हैं व्हाट इज मेडिकल हिप्नोसिस। Medical hypnosis is a powerful tool that harness the mind's potential to promote healing and well-being। ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है जब पेशेंट को प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल और उसको एग्जिबिट हो रही है सोमेटिक फॉर्म में। नींद ना आना ये कॉमन प्रॉब्लम है। मन विचार में चला गया है और नींद नहीं आ रही है। प्लानिंग करनी है कि कई कल प्रेजेंटेशन देना है तो प्रेजेंटेशन में किस प्रकार से हम प्रेजेंट करेंगे उसकी प्लानिंग है। बच्चे की एग्जाम है, 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है, 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है और उसको कोई विषय जो है इसका स्ट्रेस बना हुआ है कि ये इतना आता है, इतना मैंने नहीं किया है। उसको अपनी कैपेसिटी मालूम है। उसको चाहिए कि भाई मुझे किसी भी प्रकार से ए ग्रेड में मार्क्स मिले, 90 प्लस मुझे मार्क्स मिले, और कैपेसिटी उतनी नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न करता है, ये बच्चों में भी। अब इसके बाद लाइफ के अलग अलग स्टेज के हिसाब से इसमें प्रॉब्लम्स और साइकोलॉजिकल या फिर सोमेटिक प्रॉब्लम के रूप में होती है। तब ये एक मेथड बनती है कि हम इस प्रकार से जो बीज है, रोग के बीज है, उसको हम किस प्रकार से हम निकालेंगे। This this presentation explores history, technique, and application in modern medicine, emphasizing how hypnosis can unlock the mind and capability for better health outcome। यहाँ पर मैं सेविल टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन की एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर कोट करना चाहूंगा। ड्यूरिंग कंसल्टेशन हिस्ट्री टेकिंग के साथ साथ काउंसलिंग भी जरूरी होती है, ऐसा सेविल टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन अपने मेंटल हेल्थ के चैप्टर में लिखता है। अब हम बात करें साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के, जैसे कि हेडेक के कंडीशन में, माइग्रेनस हेडेक के केसेस में उन्होंने लिखा है, सर एक ही सेकंड, उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार से मेंटल हेल्थ, इमोशनल कॉजेज ये एंड अप करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। अब हम बात करते थोड़ी मॉडर्न पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ रिलेटेड विद द हिप्नोसिस। सर ने पहले प्रेजेंटेशन में इस पर काफी सारी जो है वो चर्चा की थी, पर आज जो हम एक विधि या फिर एक सिस्टमेटिक अप्रोच देखते हैं वो क्या है, इस पर थोड़ी एक ब्रीफ हाईलाइट हम लेते हैं। 18th सेंचुरी के बाद फ्रेंड्स मैस्मर ने ये एक साइंटिफिक और एप्लीकेबल फॉर्म में इसको जो है ये डिजाइन किया था। इस थियरी लेड ग्राउंडवर्क फॉर मॉडर्न हिप्नोसिस evolving into respected therapeutic technique used for various medical fields। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। अब मेडिकल हिप्नोसिस करता क्या है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं ब्रेन से। बेसिकली यहाँ पर दिल से बात करनी है, दिल से दिल तक पहुंचना है। पर ये जो भी काम है वो दिमाग के होते हैं, पर बात हमें दिल से करनी है। ये दिल और दिमाग के बीच की ये हमेशा संघर्ष बना रहता है और ये कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड का एक जो ट्रिप्लॉइड बनता है उसको हमें एक्सप्लोर करना है। यहाँ पर करते क्या है, ड्यूरिंग द हिप्नोसिस प्रोसेस a trained professional guides the individual into state of a focused attention and heightened suggestibility। This process allows patient to access their subconscious mind, facilitating change in perception, behavior and emotions। तो पहला पक्ष ये रहता है कि जब भी हमें कोई उसका कोज, रोग का कोज निकालना है या फिर स्ट्रेस का कोज निकालना है, तो जब सबकॉन्शियस माइंड में दबी हुई जो बातें हैं उनको पहले हमें देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, वो क्या विचार है, क्या बनाव बना है कि जिससे ये परिणाम उत्पन्न हुए। तो उसको जो है ये एक्सप्लोर करना, और जब हम उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं तो हम उनको सजेशंस दे सकते हैं। ये कहाँ कहाँ पर उपयोग हो सकते हैं, तो पहला जो है, अगर हम बच्चों में देखें तो 10 और 12 के बच्चों में इसका जो है ये काफी अच्छा एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। जामनगर में गुलाब कौरबा आयुर्वेद विद्यालय के संस्कृत विभाग में कुछ एक साल मैंने काम किया, और उस समय एक प्रोजेक्ट हम करते थे। उसमें जो स्कूल गोइंग, एग्जाम गोइंग चिल्ड्रंस होते हैं उसको सरस्वती साधना ये करवाते थे। उसमें एक प्रकार से 3 दिन का 1-1 घंटे का
ये वर्कशॉप रहता था। जो बच्चे होते थे, वॉलंटियर्स होते थे, वो एक कलश में पानी लेकर के आते थे और गुड़ुची प्रदान रख करके उनको पानी में रख करके और थोड़ा अभिमंत्रित ओम मंत्र से उसको अभिमंत्रित करके और थोड़ा काउंसलिंग करके उनको जो है हम किस प्रकार से वो फोकस को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से रिटेंशन को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से रीडिंग एबिलिटीज को बढ़ाया जाए, उस पर काम किया जाता था। और जो उसका आउटकम रहता था वो पॉजिटिव। जितने बच्चों ने इस कोर्स को, इस टेक्निक को एडॉप्ट किया था, उनमें 10th और 12th के उसके एग्जाम्स में काफी अच्छे जो है वो मार्क्स से वो पास हुए थे। तो दैट वर दी सम ऑब्जर्वेशन। आज तो मैं उस डिपार्टमेंट से करीब करीब 15 साल से एसोसिएटेड नहीं हूँ, तो मेरे पास उनके आंकड़े नहीं है। पर गुलाब कोरबा आयुर्वेद महाविद्यालय के सुश्रुत डिपार्टमेंट में ये आज भी जो है वो आंकड़े अवेलेबल। अब दूसरा कहां पर इसका उपयोग कर सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। ये तो बात हुई हम लोगों ने कि भाई किस प्रकार से उसका पॉजिटिव उपयोग करेंगे। अब हमें बात करनी है कि भाई रोग में किस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। आज जॉइंट पेन के काफी सारे पेशेंट्स आते हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस के, ऑस्टियो आर्थराइटिस के। यूजुअली ऑस्टियो आर्थराइटिस आज की लाइफस्टाइल के कारण 35 से 40 साल की उम्र में होना शुरू हो जाता है। जो एवरेज लाइफ स्पान जो है इंडियंस का, ये 69 ईयर्स का है। और यूजुअली जो है उस समय तक व्यक्ति जीवित रहता है, 70-75 साल तक भी व्यक्ति जीवित रहता है। तो ये रोग का शुरू होना और उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक पेन है। पहले तो 1-2 साल पेन रिलीवर लेता है रोगी, पर उसके बाद जब पेन रिलीवर से भी पेशेंट को दर्द में राहत नहीं मिलती और इतना लंबा अंतराल दर्द के साथ गुजारना एक दिक्कत वाला मामला हो जाता है, तो कितनी भी पेन रिलीवर दे दी जाए उनको पेन में रिलीफ नहीं मिलती। तो ऐसी कंडीशन में मेडिसिन के साथ साथ हिप्नोसिस का भी एक इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। ये माइल्जिक पेन में और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे मस्कुलर न्यूरल्जिया या फिर ऑटो इम्यून मायोसाइटिस कहते हैं। ऐसी कंडीशन में इनमें भी पेन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये डिफ्यूज कैरेक्टरिस्टिक पेन होता है। यहाँ पर अभी इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। नेक्स्ट वन इज रिड्यूस एंजाइटी। तो ये मेंटल स्ट्रेस को, मेंटल एंजाइटी को, वरी को, फोबिया को ये ट्रीट करने के लिए ये काम करेगा। इसके अलावा कौन कौन सी चीजें, जैसे इंसोम्निया एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, नींद ना आना, ये ठीक नहीं हो रहा है, इस पर मेडिसिन हम देते हैं। मेडिसिन का हैबिट फॉर्मिंग होती है और उसके साथ साथ, हैबिट फॉर्मिंग के साथ साथ ये यूजुअली देखा गया है कि एक लिमिट तक ही मेडिसिन काम करती है, उसके बाद मेडिसिन काम नहीं करती। तो ये इन कंडीशन में केवल मेडिसिन देना ये उपयोगी नहीं होता, उसको कहीं ना कहीं उसको रूट कोज हमको देखना पड़ेगा। जो स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर है, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम के रूप में हुआ है या फिर एंजाइटी न्यूरोटिक न्यूरोसिस के रूप में हुआ है, न्यूरोटिक मैकेनिज्म के कारण हुआ है, उसको हमें ये समझ करके इसके अनुरूप हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। और उसके लिए पेशेंट के मन को हमें समझना पड़ेगा। हम आयुर्वेद चिकित्सा में करने से पहले एक चीज हमेशा करते हैं, रोगी और व्यक्ति वैद्य को दीपक लेकर शरीर के अंदर जाना है। फिजिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, पर ज्ञान रूपी दीपक से शरीर, सत्व, आत्मा और मन, इन शरीर, सत्व, आत्मा और इंद्रिय, इन चारों की परीक्षा करके ही वैद्य चिकित्सा कर सकता है। तो आयुर्वेद में हिप्नोसिस किसी भी रोग में हम करते थे, इंटीग्रेटेड पार्ट था, क्योंकि डिटेल्ड हिस्ट्री टेकिंग में हम इस बात को लेते थे, सत्व की परीक्षा में इसको लेते थे। तो ये एप्लीकेशन ऑफ द हिप्नोसिस था। पर आज जिस प्रकार से उसका नोमेनक्लेचर किया गया, आज जिस प्रकार से उसकी एसओपी, उस प्रकार से इसकी एसओपी नहीं थी। हर एक व्यक्ति में ये हिस्ट्री लेने की और उसको एनालिसिस करने की विधि थोड़ी अलग अलग थी। आज हमें उसको फिर से जो है ये रिवाइव करने की यहाँ पर जरूरत है। इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। हिप्नोसिस से कहाँ कहाँ पर बेनिफिट हो सकते हैं। नेक्स्ट वी आर कंटिन्यूइंग दिस सर, नेक्स्ट प्लीज।
क्रॉनिक पेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्मोकिंग बंद करना, अल्कोहल्स और एडिक्टिव बिहेवियर्स को बंद करना, स्ट्रेस रिलीफ को करना। तो इसको मैं समराइज करता हूं। द बेनिफिट्स ऑफ मेडिकल हिप्नोसिस इंक्लूड्स एनहांस्ड रिलैक्सेशन, improved coping mechanism, reduced reliance on medication. Patient often report increased satisfaction with their treatment, leading to better adherence to medical advice and improved health outcome. ये एक काफी अच्छा ये लाभ ये मिलता है कि पेशेंट को जो मेडिसिन हम दे रहे हैं उससे उसको ज्यादा लाभ मिलता है। नेक्स्ट वन सर। Medical hypnosis offers a unique approach to healthcare by unlocking mind potential. As more practitioners embrace its benefit, we can expect to see greater integration of hypnosis in therapeutic setting, enhancing patient care and outcomes. आज जो हमारी मेडिकल प्रैक्टिस है, खास करके मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिस में पेशेंट और डॉक्टर के पास इतना समय ही नहीं होता है। पेशेंट आता है, उनका प्रॉब्लम को देखा, उनको दवाई लिखी और पेशेंट को हमने डिस्चार्ज हमने भेज दिया। इंडोर पेशेंट है तो उसमें भी जो है ये 15 पेशेंट 20 पेशेंट है, उनको देख रहे हैं, हर एक को जो है वो ब्रीफ करके हम चले जा रहे हैं। तो इसमें जो है ये कहीं ना कहीं अप्रोच को चेंज करने की जरूरत है, उनके साथ थोड़ा संवाद करने की जरूरत है और इस संवाद में के परिणाम स्वरूप जो हमें उनमें से होने के कारण हम अगर निकाल सकते हैं और इन कारणों को अगर हम छुड़वा सकते हैं किसी भी तरह से, मेडिसिन से या फिर कोई काउंसलिंग एक्टिविटी से, तो ये ट्रीटमेंट के भाग रूप में जो है के भाग रूप में ये हमें मदद रूप करते हैं। तो दिस इज पार्ट ऑफ द हिप्नोथेरेपी ट्रीटमेंट। लास्ट की हम बात करते हैं सर। नेक्स्ट वन सर। नेक्स्ट वन। चिकित्सा के में विभिन्न उपाय शामिल है, जैसे कि योग, ध्यान, शरीर मन संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो ये आयुर्वेद का अभिप्राय है। सर ने काफी एक क्लियर कट नरेशन दिया था कि हिप्नोसिस और योग एक नहीं है, हिप्नोसिस और ध्यान एक नहीं है। डेफिनेटली ये है, हिप्नोसिस जो है ये सेल्फ प्रोसेस नहीं है, सेल्फ सजेस्टिव प्रोसेस नहीं है, ये ऑटो सजेस्टिव प्रोसेस नहीं है, ये डायरेक्टेड प्रोसेस है। तो ये डिफरेंस रहेगा। पर जो लोग ट्रांस में खुद जाकर के अपने विचारों को काबू कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें तो केवल उनके लाभ चाहिए। कोई आपको सजेशन भी ट्रांस में ले जाता है या ऑटो सजेशन से आप ट्रांस में जाते हैं, तो उस चीज को यहाँ पर मैंने इन्हीं 4 वाक्यों से मैंने इसको समराइज करने का प्रयत्न किया। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसी चीज को थोड़ा जो है हम कंटिन्यू करेंगे। ध्यान एक महत्वपूर्ण साधना है जो मानसिक स्वास्थ्य, सत्व के विकास में सहायक होती है। यह व्यक्ति को आंतरिक शांति, संतुलन प्रदान करता है। नियमित ध्यान चिंता और तनाव में कमी लाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये ऑटो सजेशन के रूप में मैंने यहाँ पर रखा है, ये ऑटो हिप्नोसिस के रूप में मैंने यहाँ पर रखा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहाँ पर पूर्ण करता हूँ। इस विषय पर मुझे अपने अभिप्राय व्यक्त करने दिए, इसके लिए मैं आभारी हूँ। हिप्नोसिस की मैंने बहुत सारी ट्रीटमेंट नहीं दी है क्योंकि उसमें समय भी ज्यादा लगता है। पेशेंट के साथ रेपो बनाना और ये कंटिन्यू करना, ये भी थोड़ा जो है ये समय लग जाता है। मैंने देखा है, कुछ एक मेरे अनुभव रहे हैं, पर वो इतने सीमित है कि इसके आधार पर कुछ और मैं अपने इस विषय को ज्यादा विस्तार से नहीं रख पाया हूँ। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आभार। बहुत बहुत आभार निशांत जी आपका। आई सैल्यूट योर झील कि आप बस में थे फिर भी रेडी थे। गजब गजब। अग्निहोत्री सर प्लीज कंक्लूड। मैं लिंक चेंज कर रहा हूँ। धन्यवाद। ब्रेल डिसऑर्डर। धन्यवाद प्रोफेसर पवन शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय निशांत शुक्ला जी। बहुत ही मेहनत के साथ उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन बनाया और उन सारे क्षेत्र को कवर किया जो हिप्नोसिस शब्द के साथ में आयुर्वेद की विधा से कहाँ कहाँ समीप है,